Hello everyone. I have done 3 questions of shares and dividend. There are 18 questions which are very important. Now question number 4. This is second video. First 3 questions I have already done in the last video. Now question number 4. A man wants to buy 62 shares available at 132. Market value is 132. Par value is 100. Mean face value. Face value is 100. Now how much should he invest? How much should he invest? A man wants to 62 shares available at 132. Par value is 100. How much should he invest? Mean investment. Investment का formula you know very well, that is market value into number of shares. That is market value into number of shares. Market value 132, number of shares 62, which is equal to 8184. This is answer number 1. Now second part. If the dividend is 7.5%, what will be his annual income? You know the formula of annual income, D% into face value into number of share. D% 7.5%. You can write 75 upon 100, लेकिन डेसिमल है यहाँ पर तो उसका भी 0 लगा दो, 1000 बन जाएगा. Face value is 100, number of share is 62. Now this 20 cancel and 2 5 the 10, 2 31 the and 5 1 the 5 15 the. 15 into 31, 51 the 15 1, 15 the 45 plus 1, 46. This is answer number 2. Now third part. If he wants to increase his annual income by rupees 150, how many extra shares should he buy? इसमें लिखा है कि अगर आप इनकम 150 और चाहते हो तो आपको कितने शेयर और लेने हैं. तो कई बच्चे तो क्या करते हैं 465 प्लस 150 ऐड करके फिर उसका इनकम का लगाएंगे फार्मूला, देन दे विल गेट n. तो n विल बी 82. तो 62 शेयर ऑलरेडी हमारे बाय थे, बाकी बच गए 20. तो उसका आंसर 20 आएगा. 20 शेयर्स ही विल बाय एक्स्ट्रा शेयर्स फॉर टू इंक्रीज द इनकम 150. लेकिन आप क्या करो, 150 इनकम के कितने शेयर आएंगे, तो 150 इनकम का लगा दो फार्मूला. हमें इनकम चाहिए 150, तो उसमें टाइम बचेगा आपका. 150 के अकॉर्डिंग कितने शेयर मिलेंगे, तो दैट इज D% इंटू फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल 150. 7.5 means 75 upon 1000 into face value. Face value is 100. N is equal to 150. ये 20 cancel. 5 to the 10, 5, 15 the N is equal to 150. D% into face value into number of share is equal, income is 150. 20 cancel, 5 2 the 5 15 the. Now number of share is 2. तो this is 15 नीचे आ जाएगा, 2 पर चल जाएगा. तो 15 10 the which is equal to 20. This is answer number. मतलब with rupees 150 you will buy 20 share extra. This was the question number. This is answer number 3. This was question number 4. Now next question number 5. Very important questions I am doing. A man investment is equal to rupees 20020, buying share at a nominal value mean face value. You know
फेस वैल्यू एंड नॉमिनल वैल्यू वन एंड द सेम थिंग, कभी नॉमिनल वैल्यू लिखा होगा, कभी फेस वैल्यू लिखा होगा। नॉमिनल वैल्यू इज ₹26 एट 10% प्रीमियम, प्रीमियम इज इक्वल टू 10%। जो फाइंड प्रीमियम रुपीज़ में कैसे निकालेंगे, 10/100 इंटू फेस वैल्यू, 0 कैंसल, दिस इक्वल टू 2.6। तो प्रीमियम जब NV में ऐड करेंगे तो वी विल गेट मार्केट वैल्यू 26.26 प्लस 2.6 वी गेट 28.6। दिस इज MV। द डिविडेंड ऑन शेयर इज 15%। Dividend on share is 15%. Calculate the number of share. Number 1, number of share. You know the formula, investment upon market value, which is equal to, what is investment? 20020. Market value is 28.6, which is equal to 20020 अपॉन 286। नीचे डेसिमल का 10 आएगा, वो ऊपर चला जाएगा। नो कैंसल, 2 1 द 2 4 द 2 3 द 2 5 द 13 1 द 13 1 द 13 1 द 70। तो 13 के टेबल में 13 1 द 1 द 13 1 द, बाकी बच गया 770, 13 5 द 65, 52, 13 4 द 52 0। Now 11 1 the 11 44, 11 4 the 0। This is equal to 700। Yes, number of share आ गए 700। This is answer number 1। Now answer number 2, the dividend he receive annually। Dividend receive annually mean you have to find annual dividend, you have to find annual dividend, which is equal to D% into face value into number of shares. D% is given 15%, mean 15/100 into face value 26 into number of share. Number of share we got 700. Now 2 0 cancel, इसको मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट 2730, यू विल गेट 2730। नाउ थर्ड पार्ट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ही गेट्स ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लो आप, R% इंटू MV, D% इंटू FV। तो R% में फाइंड करना है, R/100, मार्केट वैल्यू इज 28.6, 286/10, D% 15%, 15/100 इंटू फेस वैल्यू 26, 0000 कैंसल। नो R इज इक्वल टू 15 इंटू 26, ये 10 ऊपर चल जाएगा, नीचे आ गया 286, 2 1 द 2 4 द 2 3 द 2 13 द 13 1 द 13 1 द 13 1 द 15 इंटू 10, 150/11, 11 1 द 11 4 40, 11 3 द 33, 13 7/11, 13 7/11। This was the answer number 3. Now I have done question number 5. Okay. Now question number 6. Question number 6. How much should a man invest in ₹25 share? Face value is ₹25, selling at ₹30, market value 30, to obtain an income of ₹450. If the dividend declared is 15%.
Now where to find investment? Formula of investment is market value into number of share. We have market value but number of share we don't have. तो इनकम का लगा दो फार्मूला D% इंटू FV फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर. तो इनकम की वैल्यू गिवन है 450. D% है 15/100. फेस वैल्यू हमारे पास है 25 इंटू N इज इक्वल टू 450. N इज इक्वल टू 25 ऑन द 25 फोर द N इज इक्वल टू 450. ये 4 ऊपर चल जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा. 15 3 द 45 30 इंटू 4 120. दिस इज नंबर ऑफ शेयर. बट वी हैव टू फाइंड हाउ मच मैन शुड इन्वेस्ट. इन्वेस्टमेंट फाइंड करना हमें. तो इन्वेस्टमेंट का फार्मूला इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर. व्हाट इज द मार्केट वैल्यू? 30 into number of share 120, which is equal to 3600. This was answer. Now these are 3 questions. I have done this video. Please, if you like, you share as much as possible so that other students can be benefited, and subscribe my YouTube channel for more updates.